Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Tankeshwar. Good morning, Nilesh. Good morning, Varun. What an awesome start for the day. Whatever doubts you guys are having, please do ask. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Surajji. Awesome concepts you're giving. So, thanks a lot. You're welcome. टारगेट्स कहाँ तक है? 4 to 4.8 है हमारा टारगेट. On the break of the minimality 200%, supply allocation is at 4238. Captured 5,000 pips, 40% is running with 8,000. शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ. Still 250 billion distribution is pending. आज या परसों में वो भी निकाल देंगे मार्केट में. अगर वो आ जाता है, then the market will be back in action of following the right supply and demand in the markets. Good morning, Raj. New 1 hour candle in the game. Let's start with the analysis. Good morning, Arundhati ma'am. आपका ही वेट था. अगस्त्य तो पहले आ गया. 4 बजे से. गुड मॉर्निंग सैंडी. जैसे आपको बोला था बीटीसी का लेवल 76 तक आएगा. 74 76.
This is for you. Hope you followed the analysis and executed the trade towards the short. Okay. So what are the major things that needs to be taken under the consideration for today? Starting from 1 hour. हाँ एस टू पी वन इंटैक्ट कंसिडर कर सकते हैं. Yes. स्मिता मैम एमटीएस ट्रेड करो. What are that levels at 4238? TTS levels are mathematical calculations. Okay. Following in today's scenario, what are the major things that needs to be taken under the consideration? Right? The first and the foremost, Friday के दिन market ने क्या किया था? Same rules will be followed in today's scenario as well. Starting from the morning session. Okay. So at the morning, the first indication of the moment of reversal will start from 29 so that you will be having a good backup line to cover up for today's movement action plan. Okay. So अगर आप न्यूयॉर्क सेशन 29 का नोटिस करोगे हाई वॉल्यूम के साथ डिप इंक्लूडेड थी उसी डिप के साथ मूवमेंट डेवलप हुआ था लॉन्ग के तरफ राइट सो विद दैट व्हाट डिड मार्केट डू मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली सप्लाई 100% के पास जाके मार्केट ने नेक्स्ट डे विच इज 30th के दिन आपको एक रिजेक्शन दिखाया with this rejection of continuity what did market set through the set through was a reversal plan of action जो कि डायरेक्शन के साथ ही बना था राइट सो विद दैट कंटिन्यूटी पूरा न्यूयॉर्क सेशन तक मार्केट एक रेंज ऑफ मोशन में था right with an iceberg zone with the iceberg zone what do you notice in new york session first reversal plan of action was indicated at the zone of 1 hour in london with following that what did market tend to showcase market tend to showcase a rejection but immediately if you notice post completion वॉल्यूम का रेंज ऑफ मोशन देखो न्यूयॉर्क सेशन में फर्स्ट हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ राइट रिवर्स होना चाहिए था नहीं हुआ क्यों अगर वीडियो देखे हो पार्ट 2 का बेसिक्स का एंड वॉल्यूम का with the high volume the next high volume was also with the same standard उसके बाद the next high volume was also with the same line of motion
Continuity में 4 hours of movement was showcased with the same volume structure which was not depreciated. मतलब continuity in the movement was indicated, henceforth the drop continued. So what are the major things that you need to focus on today's scenario, right? So आज के दिन में न्यूयॉर्क सेशन में जो हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ था, रिजेक्शन दिखाया, क्लोजर भी दी थी. पोस्ट दैट इन टुडेज सिनेरियो इफ यू नोटिस दिस इज द हाई वॉल्यूम, राइट, जो कि एशियन सेशन का है. क्या अभी मैं यहाँ पे रिवर्सल प्लान ऑफ एक्शन देखूंगा? यस, सेटअप फॉर्म होता है. If the setup isn't been formed, then no. Why? Because अभी तक हमारा M1 200% जो है 1 hour का वो complete नहीं हुआ है, right? So till that completion and an indication of an S2B1 setup, we will not look for a trade. अगर notice कर रहे हो, so this is the moment what we are waiting for. क्या हाई वॉल्यूम आते ही मार्केट रिवर्स होता है? नहीं. इट कम्स टू अ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन एंड उस पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ रिजेक्शंस दिखते हैं, राइट? सो विद दिस, क्या ये आइसबर्ग जोन में कन्वर्ट हो रहा है? यस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इन एन आइसबर्ग जोन, बट with a slow and steady movement, the formation needs to be taken under the consideration. अगर formation develop नहीं हो रहा है, तो no trade-off executions will be played at the current scenario. Okay, so as per the volumes, one retracement is again expected at the current stage, wherein with M1 200% playing in the game, not prior to that. Okay, now let's come down to 15 minutes to break the analysis through the volumes. Okay, so at the current scenario, what do you notice? आज के दिन में market क्या structure follow किया है? Market ने gap down open किया, गैप डाउन ओपन करने के बाद एलजी पॉइंट ऑफ एक्शन क्रिएट की, मार्केट रीडेवलप होके गैप को कवर किया इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, राइट? पोस्ट कवरिंग द गैप, मार्केट टेंड टू कंटिन्यू द मूवमेंट, right? At this point of action, did morning play in the game was showcased at this point? No, right? सो यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्ट फॉल थ्रू दिखाया था पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट. Do we have a trade-off execution at this point? No, we don't have a trade-off execution at this point. तो यहाँ पे मेजर प्लान ऑफ एक्शन क्या था? एक रिट्रेसमेंट. हाई वॉल्यूम के साथ जो 1 hour के थ्रू रिट्रेसमेंट फॉर्म हुई थी, उसके साथ S2B1 पे यहाँ पे इंटैक्ट के साथ एक और एड ऑन हुए थे, right? So now what are the major things that you have to look for? Can you hold this trade? No. At the current scenario, this trade is played in perspective of ID because 1 hour में high volume indicator 200% is just that. MTSL strong रख के ये follow through में ही trade of action plan को बरकरार रखना पड़ेगा, right? अगर इस plan of motion में on next creation of S2B1, that's when we will look for add-ons for the swing again, not prior to that. Okay? सो एट द करेंट स्टेज अगर मार्केट सेटअप बनाता है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा लॉन्ग के लिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यूटी इन द शॉर्ट मूवमेंट. ओके, एनी डाउट्स गाइस? बट सर उसने एक कैंडल में तो एलजी पेंडिंग. राज, एक चीज बताता हूँ, करंट मूवमेंट एक्शन प्लान में डेफिनेटली बहुत सारे एलजी कैंडल्स डेवलप हुआ है, राइट? अगर इफ यू नोटिस ऑन टू द प्राइस एक्शंस, फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन एलजी क्रिएट हुआ था बट इंटैक्ट होके आने के बाद देन इट वेंट टू कवर अप दैट पॉइंट, राइट? सो सिमिलर वेज, whenever there is an action plan built in a way, right, so always it will tend to showcase the movement towards the short range. अगर नोटिस करोगे यहाँ पे भी है, right? Every movement action plan, it's an indication that market is going to come back, right? A fall जो है, it's just a distribution completion game. Once the distribution is completed, you can look for the next arrangement plans करके वो बता रहा at the current stage.
So go with the analysis of supply and demand followed with the volumes. With following the volumes, apply TTS levels and be in that directions. Don't go against it. Okay, Raj? To ask, don't hesitate to ask. Yes, levels are precise. Good morning, Arya. Are you still holding BTC? Yes, there is one more level pending. Good morning, Zairji. How are you? Long time. Very good morning, Mr. Patel. I am in hurry. Okay. ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होगा यस कन्वर्ट होगा डॉलर बढ़ने की वजह से गोल्ड में क्रैश आया ओके भाई एक चीज बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DXY एंड गोल्ड मुश्किल नहीं है सिंपल है सभी लोग गोल्ड बढ़ाए सॉरी डॉलर बढ़ाए करके बोल रहे हो ना डॉलर कहाँ बढ़ा है वो बताओ राइट DXY इंडेक्स बढ़ रहा है ओके वो मानता हूँ मैं डॉलर कहाँ बढ़ा है dollar is being played a role of 90 to $91 from last 3 months. Okay. And what is DXY? As per you guys. वो बताओ पहला.
जितना DXY होता है उतना उसका करेंसी का वैल्यू होता है भाई। किसी को भी मत बता देना कि जितना इंडेक्स वैल्यू होता है उतना डॉलर का वैल्यू होता है। ओके। DXY का रोल ये है कि जो 6 मेजर एक्सपोर्ट कंपनीज है, मीन्स एक्सपोर्ट कंट्रीज है, उसके तुलने पे डॉलर की महत्व कहाँ रुक रही है। एज सिंपल एज दैट, राइट। उसमें आता है यूरो, स्विस फ्रैंक्स, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन एंड USD, and there is one more which is JBP, right? So because of that movement actions to identify what is the ratio analytical way of the money coming into that country, right? Index gives you the precision of that, ना कि DXY में जितना मूवमेंट है उतने का डॉलर करेंसी वैल्यू होगा, नहीं, that is wrong, right? Just for an example, in 2025, right, US had got 1,000 billions worth of debts, wherein the infra had created 1,500 worth of value out of it, right? 1,500 billion, okay, which is equivalent to 1.5 trillion, right? In that precisions, what is the one major thing that market is looked at, right? जब तक exports and value create a infra. For an example, अगर मार्केट DXY के 10% बढ़ती है, right, that's where each and every investments are looking to invest in, right? But in 2025, the investors moved their 50% of allocation from US to European countries. Henceforth, the euros has got stronger, but in precision of that, the market is still controlled by US, right? That is what indicates by DXY, ना कि करेंसी का वैल्यू जो है उसके हिसाब से ये बढ़ता है। पढ़ो, जो भी यूट्यूब में दिखता है वो मत देखो, रिसर्च योरसेल्फ, you will understand what is what. 'Always remember that, जब तक आपका रिसर्च स्ट्रांग है तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। Make sure you should know before what you are doing, no? कुछ भी बोलते हो, सोर्सेस क्या है भाई? मेरा सोर्सेस यूट्यूब नहीं है, ठीक है? अगर किसी को भी DXY के बारे में जानना है, फाइनेंशियल मार्केट्स की ईयर वाइज जानना है, JP मॉर्गन की एक ब्लॉग पेज है, ओके, wherein it's available for public as well, which you can use to understand what's the current infra about the market. कि ये ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर लूंगा, ये मैं डाल के नीचे जा रहा है तो नीचे लूंगा, वैसे थोड़ी होता है। रिसर्च अबाउट इट। 2024 2025 का पूरा डेटा है उसमें, चेक कर लो। 25 अप्रैल तक का ही डेटा है, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट मंथ न्यू डेटा विल बी एडेड इनटू इट।
This business is about numbers. Till the time you don't know the numbers, you won't be able to suffice in this market. Definitely, technicals is important, right? With technicals, you need to have the fundamentals of the movements. सर एक डाउट थी पूछो ना What is more important, strategy or adaptability? वाओ भाई फर्स्ट टाइम किसी ने सही क्वेश्चन पूछा है. See, strategies will give you directions, right? And analysis. But what is the most foremost important thing? Adaptability, right? जब तक मार्केट्स को आप अडाप्ट नहीं करोगे, आपके माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, जब तक आप कंसिस्टेंटली, right? If it's a failing day, maintaining that discipline. If it's a winning day, maintaining that consistency, right? That is way more important than strategies, right? Just for an example, मान के चलो आपका स्ट्रैटेजी A1 है, राइट? स्ट्रैटेजी तो हजारे है ग्रुप में, राइट? उसके साथ अभी आप मान के चलो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, स्टैंडर्ड लॉट, राइट? अभी आप डायरेक्टली 5 स्लॉट पे नहीं जा सकते हो, राइट? क्योंकि एक छोटा सा मूवमेंट में भी फ्लक्चुएशन इतना दिखाएगा जितना आपका पूरा टीपी होता था स्टैंडर्ड लॉट साइज पे, उसका एक फ्लक्चुएशन में दिखता है, राइट? सो टिल द टाइम यू वोंट अडॉप्ट द adequates of your mind and having that consistency and discipline while execution, you won't be able to survive in this market, right? Kitna bhi behtar strategy, right? One definite thing that you have to work on, let it be how experienced you are doesn't matter, how beginner you are doesn't matter. If you can, मतलब आप सब्र रख सकते हो इस बिजनेस में, हर एक चीज आपके कदमों में होगी इस बिजनेस में. The patience is the most important key role in adopting this business in your blood. Beautiful question, yeah, but loved it. Good morning, Anurag. I have few questions related to the new video on TTS concept and volume analysis. Okay. Volume iceberg needs to be checked on 1 hour time frame only. Can we check on 15 minutes, 4 hours or daily? No, only 1 hour. As a ID trader, only 1 hour. In volume analysis, as the volume dips, spikes, dips, we expect reversal or a retracement. But at times, the after that formation, volume keeps decreasing, move continues. Volume keeps increasing, move continues without giving reversals, retracements. So how to know if the price will reverse or retrace or continue at which significant level? This formation, which are valid, which are invalid formations.
सर 950 बी एंड 700 बी एक्सप्लेन कर दो, क्यों देखना है, कब देखना है, कहाँ से देखना है? नहीं नहीं, वो आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपका मेजर होल्डिंग्स नहीं है ना, आपका तो आईडी ट्रेड है। 950 बी एंड 700 बी इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट? जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, वो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है। 950 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड नीड्स टू बी अलॉटेड टू द मार्केट्स, उसमें से 700 बिलियन ही अलॉट हुए एट द करेंट स्टेज। वो बोला था ग्रुप में उतना ही। ओके, एंड नीलेश, फॉर योर पॉइंट ऑफ एक्शन, हाउ डू यू लुक फॉर अ वॉल्यूम? व्हेन डू यू लुक फॉर अ वॉल्यूम? whenever it's at her rejection point, right? अगर एक हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ है, क्या वो डायरेक्टली जाएगा? नहीं, डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा, नीचे आके पॉइंट ऑफ एक्शन ढूंढेगा। मिनिमलिटी 100% हो, सॉरी, मिनिमलिटी 200%, 150% हो, या सप्लाई एंड डिमांड 100% हो, 150% हो, सरप्लस 100% हो, राइट? जब तक वो हिट नहीं होती, उधर से ही रिट्रेसमेंट आती है ना। एंड जितना भी मूवमेंट एक्शन प्लान वॉल्यूम के साथ दिखने दो, फर्स्ट एक्शन इज ऑलवेज अ रिट्रेसमेंट, राइट? रिट्रेसमेंट होके जब ब्रेक होता है वो लेवल 200% का, दैट्स व्हेन द कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट विद एन आइसबर्ग इज चेक। जब तक वो मूवमेंट डेवलपमेंट में नहीं आती है, तब तक विल नॉट लुक फॉर अ चेक ऑन इट। ओके, सो फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन इज रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के साथ सेटअप फॉर्म हुआ है, and the volume sustains in an iceberg zone, then the continuity in the movement will be checked, right? एग्जाम्पल मान के चलो, अभी मार्केट एक ड्रॉप दे रहा है, ठीक है, राइट? सो इस ड्रॉप में एक आपको हाई वॉल्यूम मिली है, राइट? सो यू गॉट वन हाई वॉल्यूम फॉर्म। Extremist. Okay, one second.
No, no, I'm not talking. So in previous thing you said there was $1 billion of distribution still pending. Can you explain that? And where can I get the level of news? I tried finding online but couldn't get any sources. नेक्स्ट सेशन में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, राइट? यू विल गेट इट. When 150% and 200% move is completed, then in opposite direction a small retracement candle is done. Then at that time we need to instantly mark first come first serve for the opposite move. Yeah, for the next rejection point. अगर next rejection point deploy दिखता है, एक single candle तो mapping होगी ना? If market is falling, just for an example, with that small fall, the market needs to create a ambush structure, right? नीलेश and अनुराग दोनों का डाउट एक ही साथ क्लियर करता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड. Okay, so just for an example, market is falling. Okay, so अगर ये market यहाँ पे fall हो रहा है and आपको इस point of action पे एक high volume candle दिखी है, एक सेकेंड में. I'm connecting to the new plot.